Good morning, good evening, good afternoon. How you doing? Hope you're well. Thank you for being here as always. Right, today we're gonna look at Badshah's 3 a.m. Sessions EP, and yeah, Hip Hop Guys provided the English subs. Shout out to him because he's just incredible with what he's doing at the moment. All of them are MEB, Gamer Run, Subtle Lyrics, Rap Lyrical Videos, Savage Guy. Shout out to the OG, the original. So yeah, and if you have been following the channel, then you know that I've already covered Badshah's and Karen Aujla's Players track from 3 a.m. Sessions, but we're going to go through it, as a full thing, and hope you enjoy it. I haven't heard it before, so it's the first time, isn't it? I've already covered Nayab, CD Mort's album. I've already covered Champagne Talk, King's album, and Badshah's going to be the next one in the list. And Karen Aujla's EP as well. That's available if you're a member on YouTube or a member on Patreon. It's all there for you. Good. Right. Should we get started? It's going to maybe a bit of a long video as always, but it doesn't matter because we're gonna look at it. Good. No more talking, more watching. Let's go. Are we recording? Here we are. Wait, I can't remember the video. Oh, it's gonna be good. Let's go. Tip it tap, sawa ki kalai sadti na kinek. Kita di machine, bad boy on the trap. Baby kare bounce, just hit a rocket check. Sir pe hai ground, baby no cap. Sick, meri drip, meri sick, oh cap. Do you know what's funny, right? Like, I'm listening to this Badshah, this version of Badshah, or the most recent versions of Badshah, but I've just uploaded a reaction to his, is it Shooty track, something like that? Him and Honey sing. If you haven't checked that out, go check that out, right? Because that song was worse than trash, mate. That song was just awful. Go check that out. The subs, the reaction, sorry for that. But then you listen to this Badshah and you think, what happened back then? But that was 2007, so. रट मेरा रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे स्लैप 10 में से 10 तुम्हें 10 में से 20 तेरे सिवा आगे ना किसी के बोलूं प्लीज भर के न ले गुची की कमीज तेरे पीछे पूरा टाउन मेरे पीछे है पुलिस baby you're a good girl and I'm a bad boy मेरा lifestyle है थोड़ा flamboyant I got it I flaunt it the only time I give a fuck is when she want it I like that as well. The only time I give a fuck is when she want it. I'm going to use that on my wife. The only time I give a fuck is if you want it. That's a good one, to be fair. Let's go. I flaunt it the only time I give a fuck is when she want it Shy honey, hi honey, ਸੁਣਦੀ ਏ ਬਾਬਨੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਭਨੀ ਜ਼ਦਾਉ ਮਨੀ ਲੈ ਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਟਿਫਨੀ you so funny ਹੱਗਦੀ ਏ ਰੱਚ Nice. I remember this. Like I said, yeah, so Karen Aujla EP for you, that's out. It's on Patreon. It'll probably be out on YouTube at some point, but I haven't decided when that will be. So if you're really interested, go check that out. It's only £3 a month. It's literally less than a Starbucks if you live in the US, or well, anywhere really, because Starbucks is everywhere. So yeah, £3 a month. It's now really. It's less than this cup of coffee that I'm drinking right now because it's in a big cup. This is £3.10. Alright. ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਭਨੀ ਜ਼ਦਾਉ ਮਨੀ ਲੈ ਦੋ ਕਹਿੰਦੀ ਟਿਫਨੀ you so funny ਹੱਗਦੀ ਏ ਰੱਚਲੀ ਤੂੰ ਰੱਚਲੀ ਸੋਹਣੀਆ ਲੈਸ਼ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਫਿਊ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂ ਹੀ ਸੌਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਂ ਨਾਲੇ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮਕਸੀਕੋ ਵੇ ਨਾ Karen Aujla is absolutely obsessed with Mexico, mate. Absolutely obsessed with Mexico. He had a track based on Mexico, like, with the mariachi band, and pretty much every track that I've heard so far. I think there was maybe one track from the
was it Yeah Nah track from the For You EP where he mentioned Mexico again. I don't know what his fascination is with Mexico, I'll be honest with you. ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਪੀਣੀ ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮਕਸੀਕੋ ਵੇ ਨੱਕ ਵੱਲ ਦੇਖ ਜੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਕਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈ ਲੋ ਤੇ I remember listening to that Mexico track for the first time, and he said coca, and obviously, you know, you automatically assume that he's talking about cocaine. But that's a nose ring, that's a nose pin. I didn't know that back then, you know? ਲੈ ਲੋ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗਾਂ ਜੀ ਦੋ ਲੈ ਲੋ ਲੈਂਬੂਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਲੈ ਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂ ਬਲੈਕ ਮੀ ਐਲੋ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨਾ ਕਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਨਾ ਕਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਪਰਾਂਦਾ ਨੀ ਪਰਾਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਪਰਾਂਦਾ ਨੀ ਪਰਾਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਦਿਲ ਲੈਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਦਿਲ boy Badshah. Karnojla, Yep. let's go. Alright, players. I mean, like I said, I'd already heard that track, so we'll wait for... The next track is Sanak from the 3 a.m. sessions, and we'll check that out, but I've just muted it for the time being because it takes a bit longer to load with OBS. It just takes a bit, you know, more processing power from an old laptop. And this is 6-year-old, man. 7-year-old now. I forgot 2023. Players, like I said, go check the original reaction to that. That was just, you know, so I can get myself into the mood of the EP. And what a great track to start off the morning, by the way, players. Great track, start off the morning. Do a little bit of dance. Make a little... No, I can't make a little... good. Next track, Sanak. Let's go. Craziness, okay. It's a 2-minute track. Alright. प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी मानसिक संतुलन अपना खोने लगी पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी एक रात में हिलाव उसे होने लगी मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है स्केड्यूल थोड़ा टाइट है कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी पिए से है के जो घूटों से बनी मेरी न किसी इंसान से बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी मेरे गोयाट के बैक कानों में टिफनी मेरे और जीत के बीच कोई बट इफ नहीं टीओ की टिप्पणी पे न करूं टिप्पणी तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिर जो भी चलता है उसकी गली फाड़ता फिरूं हिट पे हिट मैं मारता फिरूं दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं I was waiting for that drop. We're gonna go back to it real quick. This more feels like an interlude, if you will, compared to Players, and just the duration of the track as well. चाटता है तू मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिरूं कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिर जो भी चलता है उसकी गली फाड़ता फिरूं हिट पे हिट मैं मारता फिरूं दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं हमें डूबने का शौक था उसे बचाना आता था हमें मचने का शौक था उसे मचाना आता था जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी कि हमें नाचने का शौक था उसे नचाना आता था this track just feels more like an interlude, to be fair, because it's short. He's sort of gone straight in. Obviously, there's 2 hooks in there, but call them mini bridges, if you will. But yeah, that was okay. Like as an interlude, that's all there was to it, really. So next track, Fast Cars. But again, we're going to do the same situation here. We're going to pause it real quick. There we go. Right, Fast Cars. Next track. Yeah, Sanak was okay. Craziness was alright. 3 a.m. sessions, let's go. Fast Cars, let's have it. Are we?
fast cars, you like to party. I like coke, baby, you like Bacardi. अगर देखकर तेरी ये बारी दोनों chill करें, दोनों high हैं जैसे palm trees in California, yeah, जो तुझे चाहिए. We're both high, like palm trees in California. Nice, nice. That's why Badshah is a commercial god. दोनों high हैं जैसे palm trees in California, yeah, जो तुझे चाहिए वो मुझे चाहिए. आया तेरे घर के बाहर, जल्दी नीचे आ जा और आजा होके तैयार. ये गाड़ी आ जाने वाली है तारों के पार. कुछ ऐसा पहन जिसमें जिस्म तेरा दिखे, दिमाग चले, कलम नज़म में कोई लिखे, वहाँ चले जहाँ पे बस तू ही दिखे. हो बातें उतनी ही जितनी होनी चाहिए, होश तेरा उड़े नींद मेरी होनी चाहिए. Like, the thing is, it's 3 a.m. sessions, the self-care playlist, and again, that's why most of the tracks so far, they've been that lo-fi-ish reggaeton style, you know, softer beats, because again, we're talking 3 a.m. sessions, the self-care playlist. No one wants to listen to, you know, heavy rock on a self-care playlist, because then that just takes it over the edge to do whatever. But I like the concept of it, the self-care playlist. I like it. It's not even like an EP, it's like just a playlist of some of the, you know, some of the tracks that would make you feel better. दिमाग चले, कलम नज़म में कोई लिखे, वहाँ चले जहाँ पे बस तू ही दिखे. हो बातें उतनी ही जितनी होनी चाहिए, होश तेरा उड़े नींद मेरी होनी चाहिए. माफ हर चीज पर खता भी होनी चाहिए, थोड़ा सा तू हंसे थोड़ी थोड़ी रोनी चाहिए. I like fast cars, you like to party. I like coke, baby, you like Bacardi. अगर देखकर तेरी ये बारी दोनों chill करें, दोनों high हैं जैसे palm trees in California, yeah, जो तुझे चाहिए वो मुझे चाहिए. टीचरों की गालियाँ न सुन, माँ बाप के ताने मत सुन, अपने फ्रेंड्स की कहानियाँ न सुन, किसी और के गाने मत सुन. छोड़ दे सब चल साथ मेरे, हाथों में डाल हाथ मेरे, समझ तू थोड़े जज्बात मेरे, हो जा संग बर्बाद मेरे. आएगा मजा, बड़ा आएगा मजा, गले मेरे लग बेबी छाएगा नशा. मेरे प्यार का जॉइंट बना, मैं तेरा सुसाइड पॉइंट बना. I like fast cars, you like to party. I like coke, baby, you like Bacardi. अगर देखकर तेरी ये बारी दोनों chill करें, दोनों high हैं जैसे palm trees in California, yeah, जो तुझे चाहिए वो मुझे चाहिए. Alright, yeah, Fast Cars, that's a nice one. Again, the name, Fast Cars, it kind of, when you, if there was to be a video for this, it would be a sort of, you know, arm at the window, driving, one hand, that type of stuff, you know, sort of street lights flying past you, which is, you know, fair dues. It's, you know, it's a different video, isn't it? But that's what that reminded me of, and the sort of juxtaposition between the tempo of the track and the title of the track, you know, with you know, like I said, Fast Cars, but it was clearly a slow track. It was clearly like a, you know, like a lo-fi Drake style track. Bit of The Weeknd in there as well, with some of the reverbs. But okay, So Far Players has definitely been the sort of top single from it, if you will, the best track from it. But Fast Cars is just, that's the type of track, like I said, you know, nighttime, if you've got like a long drive or something like that, put that track on and you'll be... Do you know what? Don't put that track on, because I can see people maybe sort of, you know, dozing off to it and reminiscing too hard and forgetting that they're actually driving. So if you're going to listen to it, just, you know, be careful and be the judge of your own life, basically. That's what I'm trying to say. God, that was too profound, and that's not what I meant. Alright, next track in line, Basket Bahar. Let's get on with it. Badshah, love it. 3 a.m. sessions. So far, pretty decent little EP. Nothing too sort of, you know, from one extreme to the other. That's sort of been within that theme, within that rhythm. Let's go. What's it called? Out of Control. Basket Bahar. Okay.
Yeah, Hey, Chips guy, you're too sick, bro. मैं फ्लाइट में हूँ, मैं सोया नहीं, वो छोड़ गई, मैं रोया नहीं, परसों रात जिसके साथ था मैं गाल उसका चूमा. See, kissed her on the cheek in this one, but in 2007 he was talking about some other bullshit, you know? He's come a long way, he's matured as a man. मैं रोया नहीं, परसों रात जिसके साथ था मैं गाल उसका चूमा. कहती गाल अब तक धोया नहीं, लो फिर एक बार पेशे खिदमत है मेरी जिंदगी. लो मजे, वो बच्चे को स्कूल भेज कर करती है कॉल मुझको. सुबह 9 बजे मैं दास्तान अपनी लिखने बैठूंगा, तो कईयों का नाम आएगा. किसी की बन जाए जिंदगी शायद, तो किसी के गले से नीचे न जाम जाएगा. रिकॉर्ड तोड़े दिल कहीं तोड़कर, सबसे ऊपर क्योंकि पीछे सारे छूट गए. गैर बन बैठे फैमिली जो बचपन से अपने थे, वो सारे रूठ गए. अब फोन भी आने बंद हो गए हैं, कहते तुझको तंग करना नहीं चाहते. तेरी जिंदगी रंगीन है बड़ी, उसमें अपने फीके से रंग भरना नहीं चाहते. जो तू करता है वो करना नहीं चाहते, तुझसे प्यार करते हैं तुझसे डरना नहीं चाहते. तू हर बात पे ही लड़ने को तैयार बैठा है, हम लड़ना नहीं चाहते. जो सपने देखे थे वो कब के पूरे कर लिए, बिजनेस गाड़ियाँ कपड़े जूते घर लिए. वो मुझसे पूछती है कितना प्यार करता है, मैंने बोला जिस पे मरना था मर लिए. वो मुझसे पूछती तू रातों को क्यों जागता है, इस गली से उस गली में क्यों तू भागता है. रात मेरे घर पे सुबह किसी और के, ये बता तू गुजर रहा किस दौर से, तू क्या खा रहा है. Yeah, like I said, they're following a certain theme, apart from Players, which was a little bit more upbeat, but they're following that sort of, again, a 3 a.m. sessions feel. That's the only way I can describe it. It is that lo-fi, you know, slow tempo-ish. तो को क्यों जागता है, इस गली से उस गली में क्यों तू भागता है. रात मेरे घर पे सुबह किसी और के, ये बता तू गुजर रहा किस दौर से, तू क्या खा रहा है और तुझे क्या खा रहा है. लैम्बोर्गिनी सही है पर ये रास्ता कहाँ जा रहा है. 24 घंटे Your Lamborghini is good, but where's your path going? So it doesn't matter how you're gonna get there. It's more like, you know, where are you going? साथ कभी गायब तू महीनों भर, कितना उड़ेगा रह ले जमीनों पर. कंपटीशन खत्म रहम खा अब कमीनों पर, कितने दिल है तेरे आएंगे कितनी हसीनों पर. उंगलियों में ये जो पहने हैं तूने, क्या तुझे सच में यकीन है उन नगीनों पर. तेरे एस्ट्रोलॉजर क्या बताते हैं, ये बुरे सपने तुझे आज तक क्यों सताते हैं. किसका गम. What does your astrologer say? Like, my wife, she is crazy about astrology. You know, she'll send me screenshots of Pisces and Libra and all that. Obviously, you know what astrology is, so I'm not going to get into it. But I don't know how I feel about it. Sometimes it's like, ooh, that looks good. But then the other times you think, who's making this fluff up, you know? क्या बताते हैं ये बुरे सपने तुझे आज तक क्यों सताते हैं. किसका गम खाता है ये बताइए, चश्मे काले किसकी यादों के आंसू छुपाते हैं. लियो में ये जो पहने हैं तूने, क्या तुझे सच में यकीन है उन नगीनों पर. तेरे एस्ट्रोलॉजर क्या बताते हैं, ये बुरे सपने तुझे आज तक क्यों सताते हैं. किसका गम खाता है ये बताइए, चश्मे काले किसकी यादों के आंसू छुपाते हैं. हम कौन क्यों हैं और क्या है ये बता, और तेरी जिंदगी में कहाँ पर आते हैं. मुझे चाहता नहीं कोई, लेकिन बादशाह को सारे चाहते हैं. ये बातें करने. No one loves me, but everyone loves Badshah. Think about that for a second. That's a powerful line. It's like no one wants to talk to me, but all of a sudden when Badshah became a big thing, everyone wants to talk to Badshah. You know, it's incredible how that works, you know? People come out of the woodwork and you think, where have you been? But all of a sudden you're here, you want to be my best friend. It's crazy. लेकिन बादशाह को सारे चाहते हैं. ये बातें करने का फायदा ना कोई, मेरी जिंदगी का कायदा ना कोई. मैनू चाहिदी है तू पर मैनू चाहिदा नहीं कोई. तू किससे बात कर रही है मुझको पता नहीं, तेरे आगे बस मेरा जिस्म है. प्यार करता है और जब प्यार मिले भागता है. आदमी की कैसी किस्म है. ये बातें खैर ना ही करो हमसे, हम बेकार हो चुके हैं. हम तो अब खुद के बस में ही नहीं, हम बस के बाहर हो चुके हैं. Basketball, yeah, so it's out of control. Again, it's a juxtaposition of, you know, it's out of control, but then the track seems more controlled, and you know,
He knows what he's saying on it. It's good how he's sort of creatively made this EP so far. Obviously, we've got a few more tracks to go yet, so stuff might change and may become more upbeat. But so far, it's definitely felt like it's kept within that 3 a.m. sessions idea, notion. All right, let's go. Next track, Kaya. However, okay. अब वो केयर नहीं करती, दिल में जो बातें हैं वो शेयर नहीं करती, रोती भी नहीं लेकिन हंसती भी नहीं है, लगता है जैसे उसकी बस की नहीं है, गिव अप कर चुकी है वो, काफी हर्ट हो चुकी है वो, जो कभी सोना चांदी डायमंड होती थी उसके लिए डर्ट हो चुकी है वो, और ये पता है उसे, लेकिन क्यों ऐसा लगे ना कोई खता है उसे, वो अब भी रानी ही है कोई It's almost like a sort of poetry, like spoken word, if you will, spoken poetry. No, what am I thinking of? I think it is, isn't it? Spoken poetry. I think that's what it's called. People are gonna be like, "Oh, that's rap." It's not rap. It's spoken poetry, isn't it? That's what it feels like. लेकिन क्यों ऐसा लगे ना कोई खता है उसे, वो अब भी रानी ही है कोई बताए उसे, ये माथे पे शिकन है जो कोई हटाए उसे, दे दुआएं उसे, क्यों कोई भला रुलाए उसे, वो हंसने को तैयार बैठी है कोई हंसाए उसे, कोई फिर से पलकों पे बिठाए उसे, समझाए उसे ये कि उसकी आंखों की चमक है महंगी दुनिया के किसी भी हीरे की कीमत से, सूरत की धनी है लेकिन मालकिन लगे किसी सल्तनत की सीरत से, उसके आंसुओं. See, I know obviously I think we're about halfway through the whole EP, but I'll be honest, right, so far it's not an EP that I would choose to listen to, in my spare time or anything like it. It feels like he's sort of leaning too much towards this, like I said, this lo-fi type of beat, that sort of almost like a reminiscent style beat. But I mean, it's 3 a.m. sessions, at 3 a.m. you're gonna have the reminiscent side, you're gonna have the drunk side, you're gonna have the high side, there's gonna be different people at 3 a.m. that sort of thing. A self-care playlist doesn't necessarily mean it has to be a slow tempo track for you to reflect back on what you've done for the day or week or whatever it is. So I feel like the next, maybe I think there's 2-3 tracks left, I feel like that's where he needs to put something a little bit different. Like Players was a little bit different, it was definitely more upbeat than the rest of the tracks that I've heard so far. So he needs to, potentially he'll do it, I don't know. Let's go. के लायक इस ज़मीन पे कोई नहीं, किस चूतिए के पीछे वो इतनी रातें सोए नहीं, पर कोई नहीं, ऊपर वाले के खेल अलग हैं, अजब हैं, वो संभाल लेगा, वो फिर से चहकने लगेगी, ऐसा कोई कर कमाल देगा, उसका अच्छा सोचने वालों की तरक्की होने लगेगी, बता रहा हूँ मैं, उसका बुरा सोचने वालों का कर वो बुरा हाल देगा, जहां से गुजरेगी फिर से गुलाब और चमेली के फूल खिलेंगे, सूरज भी चमकेगा और बारिश भी होगी, रेनबोज बनेंगे, महकने लगेगा, सच में सब महकने लगेगा, तेरा मेरा क्या है, हम फिर कभी और मिलेंगे, खैर. Yeah, it's too much. Like I said, it's leaning too much on that lo-fi feel, a sort of emotional reflection type track. But I think with Badshah, obviously he's potentially got some good lines. I think it was that track called Vo, I think with Ika. That was a very good track. And wait,
Wait, sorry, just distract. This is called Ichiban. Wait a second, Ichiban. Isn't that? If anyone watched Friends, there's an episode where Joey asks Chandler to give a tape to one of his producers or friends that he works with. Chandler says he did, and then Joey's like, well, if you did, then you know that I know that you'd make a comment, especially you, he says. And Joey's advertising the Ichiban, which is the sort of gents lipstick, if you will, you know. Brilliant. Ichiban, class. But there's... Alright. Anyways, right, let's go. Yeah, so... it's too much into this slow type of track. I want something a little bit different. But then again, it's an EP. Maybe that's the whole point of the EP, just on that self-care playlist, on that self-care idea. Ichiban. मैं वास्तव में जैसे संजय दत्त वास्तव में आज तक सबसे तेज जैसे आज तक मैं नागराज सांप गई आस्तीन में कैसे पूजा करूं खुद की तभी नास्तिक में कभी ना खत्म होने वाला प्लास्टिक में मुझे ना सीरियसली लेना सरकास्टिक में दिल से निकले मेरे आर्ट हार्टिस्ट में बेसिक नहीं सिक में क्लासिक में पीओपी जैसे चेंज करो सीन हर बार गेट पे इतने लोग घर बना दरबार मेरे गाने चले गोरों के क्लब और मेरे गानों पे लोग करें गरबा क्यों इतना रोते हो You cry baby मेरी philosophy ride or die baby introvert मेरी philosophy ride or die baby introvert होती नहीं hello hi baby you already know B-A-D B-O-Y baby मन करे सीधा लंदन में लैंड करूं कुछ मेरी philosophy ride or die baby introvert होती नहीं hello hi baby you already know B-A-D B-O-Y baby मन करे सीधा लंदन में लैंड करूं कुछ भी नहीं छोटा मैं सब ग्रैंड करूं पैसे ऐसे जैसे मैं कोई बैंक करूं मैं सीधा करता हूं मैं ना प्लान करूं वैसे ज़बानें इनकी बहनी ये मेरे आगे कुछ भी ना बोले जैसे मुंह में इनके खैनी इंटरव्यू में कुत्ते की तरह भौंके पर बीफ नहीं चाहिए मुझसे बन जाते जानी सब चुकता करूं कुछ ना रखूं पेंडिंग तेरी मिसअंडरलाइंग मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग बैड बॉय शाह बंदा माइंड बेंडिंग जैसे नोलन की फिल्मों की एंडिंग में रहता हवा में जैसे Nice, nice. Shout out to Chris Nolan, by the way, one of my favourite directors. What's going on here, by the way? I'm sick of these. Sick of these. What's happened? Ending, bad boy शाह बंदा माइंड बेंडिंग जैसे नोलन की फिल्मों की एंडिंग में रहता हवा में जैसे मेरा लैंडिंग गियर खराब हो और दिमाग भी बॉय मेरा लैंडिंग गियर खराब हो और दिमाग भी बॉय तीर चलाऊं तो सीधा निशाने पे ही लगाऊं मैं लगाऊं आग भी बॉय ये नशा है उस जिंदगी का जो मैं जी रहा हूँ ये शराब नहीं बॉय एक खोखा लेता शोका छोड़ता ना कोई मौका लगेगा ना हिसाब भी बॉय फेक फॉलोअर्स पर शो सारे सोल्ड आउट ब्लैक कार्ड मैक्स आउट नहीं बॉल आउट मन मार के रह जाते हिटर्स जब 0075 काफिला करे रोल आउट
Baby यसू Swarovski वाली शाइन नहीं, दो दो AP रखी एक में भी टाइम नहीं. Number one, दो दो AP रखी एक में भी टाइम नहीं. Number one, और ये मेरा crime नहीं. Number one, और ये मेरा prime नहीं. क्यों इतना रोते हो? क्यों इतना रोते हो? Why you cry? Yeah, I mean, Ichiban, after Players, it's probably my favourite track. After Players, it's really good. I enjoyed that. Again, he still kept within that same theme, nothing's really changed. And but he managed to pull it off, so I don't know, is this the last track? I want to say that this is the last track. Hold on. Oh, it's gonna kick my face in, mate. Yeah, this is the last track of the EP. This got Too Many Hearts, so he's going to close it out with this, and no doubt it's going to be a similar sort of vibe to it, because that's what the whole album's been, the whole EP's been. So right, Ichiban, yes, Players, Ichiban, two of my favourite tracks so far from this EP, and let's go for the last track. Don't break my heart, baby. Don't break my heart, baby. Don't break my heart, baby. ईशा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. पूजा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. सोनिया मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. नेहा मेरा दिल ना तोड़ो, I used to know a girl दिल named ना Neha, तोड़ो, and मेरा I दिल did not ना like that तोड़ो. woman. मुझे Did तो not like पता her, है so तेरा बॉयफ्रेंड है, fuck Neha. तुझको पता है मैं आवारा हूँ. लाइफ में तेरी सब सॉर्टेड है, बस मैं ही एक खिला रहा हूँ. मुझको पता है कि तू है उसकी, फिर भी क्यों होती मुझे जेलसी. बात न करे तू अब पहले सी. I know मैं हूँ selfish, I know मैं हूँ selfish. ईशा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. पूजा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. सोनिया मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. नेहा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. एक्ट ऐसे करती है जैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चोरी से तू मेरे फोन में झांके. जब मैं इंस्टाग्राम पे चेक करूँ DM तेरा मुंह सीधा, लेकिन टेढ़ी होती तेरी आंखें. ना मैं तेरा बंदा, ना तू मेरा. Yes! दिल ना Yes. तोड़ो. Sometimes एक्ट you ऐसे gotta have the करती है second track जैसे just to फर्क get you नहीं hyped up, you know what I पड़ता, mean? लेकिन Brilliant. चोरी से Too तू Many मेरे Hearts, love फोन it. में That hook as झांके. well. जब मैं इंस्टाग्राम पे चेक करूँ DM तेरा मुंह सीधा, लेकिन टेढ़ी होती तेरी आंखें. ना मैं तेरा बंदा, ना तू मेरी बंदी, फिर भी जानना चाहे मैं व्हाट्सएप करूँ किनको. अपने बर्थडे पे तुझे Chanel LV Prada नहीं चाहिए, तुझे चाहिए मेरे फोन का पिन कोड. ईशा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. पूजा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. सोनिया मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. नेहा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. फोन मुझे करती है कॉलेज के काम से, नंबर मेरा सेव्ड है रूपाली के नाम से. तूने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी क्या? ना यार मैं तो शुरू करूंगी शाम से. मैं तो फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ, बॉयफ्रेंड के साथ हूँ ना, सुबह से बस खा रही हूँ. उसे क्या पता कि तू क्या करने जा रही है, जब तू कहती मैं तेरे घर नोट्स लेने आ रही हूँ. Don't break my heart, baby. 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 मैं एक कहावत याद आ गई, हर कोई पिज्जा चीज बस नहीं होता. इतनी सफाई से झूठ बोलती है ना, तभी तो लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं होता. ईशा मेरा दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो, मेरा दिल ना तोड़ो. पूजा
मेरा दिल ना तोड़ो मेरा दिल ना तोड़ो सोनिया मेरा दिल ना तोड़ो मेरा दिल ना तोड़ो नेहा मेरा दिल ना तोड़ो मेरा दिल ना तोड़ो कनिका मेरा दिल ना तोड़ो मेरा दिल ना तोड़ो रूबी मेरा दिल ना तोड़ो मेरा दिल ना Oh, he's तोड़ो adding 2 more. Excellent. Badshah, bro. Hey. Alright. Now, in terms of an EP, for what he wanted it to be, it's exactly what it was. You know, 3 AM Sessions is stuck true to that name. Like I said, with the lo-fi beats, slow tempo. There was a lot of reverb in the vocals of Badshah, which sometimes can symbolize the sort of emptiness that he's been feeling at that time at 3 AM Sessions. And obviously it's called the Self-Care Playlist, which it seems like he sort of curated his own EP just to be like, all right, this fits that 3 AM Sessions. And a couple of tracks like, Players and Too Many Hearts, a little bit more upbeat than the rest. Ichiban, like I said, that's a really good track, I really enjoyed that. But the rest of them were very slow tempoed, very sort of, almost like a reminiscent type of track. But yeah, I mean, yeah, Ichiban was probably that type of, Players, Ichiban, Too Many Hearts, and then the rest, whichever way you want to put them in. But all in all, again, not really an EP that I would specifically choose to listen to like on a daily basis, but if someone put it on, or at least one of the tracks, then yeah, I wouldn't turn it off. That's the thing about it. But yeah, this is more towards that Drake style vibe, maybe a bit of the Weeknd vibe. Some of the tracks a bit of the reminded me a bit of the Weeknd. But yeah, look, let me know your thoughts in the comments. What do you think of the whole EP, 3 AM Sessions? Did you like it? Did you not like it? You can let me know in the comments. You can hit me up on Instagram, Twitter, all that kind of good stuff. And yeah, I'm gonna go. I am going to go. I'll catch you on the next one. Until then, stay safe, stay alert, and goodbye from me.